10.3 question number 8 will be discussed in this part. The remaining questions are already discussed. You can check the link in description box. So let's start. Question number 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit. Temperature वहाँ पे Fahrenheit में measure किया जाता है. Whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit into Celsius. ये इक्वेशन है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रही है. वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस. सेल्सियस को हमें एक्स एक्सिस पे एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस पे हमें लेट करके वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. सो वी विल स्टार्ट इट. दिस इज द इक्वेशन. एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द सेल्सियस स्केल एंड वाई एक्सिस इन फ़ारेनहाइट. स्केल जो हमने लिया है 5 यूनिट्स के गैप पे हमने x axis पे लिया है and scale of y axis is 1 centimeter equals to 5 units. Now we'll find its solution. Put c equals to 0. हमने इस इक्वेशन में c 0 रख दिया. c x axis पे है and y पे फ़ारेनहाइट. So c is 0. So f equals to 9 upon 5 into 0 plus 32. F equals to 0 plus 32. So F here is 32. 0, 32 is the first solution. We will mark it here. This is the correct 0, 32. Then we'll put C equals to 10. F equals to 9 upon 5 into 10 plus 32. It will be cut by 2. 9 2s are 18. 18 plus 32. So F equals to 18 plus 32, that is 50. So जब हमने C 10 रखा, we get 50 as Y. That is Fahrenheit. Now we'll plot it. 10 is here. 50 is here. So this is the correct point. This is 10, 50. Now we'll join these two lines like this. This line represents the equation F equals to 9 upon 5 into C plus 32. So first part is done. We have plotted a graph. Now second part is if the temperature is 30 degree Celsius. Celsius हमारा 30 degree है. So what is the temperature in Fahrenheit? तो Fahrenheit में क्या temperature होगा? This is also a very easy question. We'll write here putting C equals to 30 degree in given equation. So F equals to 9 upon 5 into 30 plus 32. It will be cut by 6. 9 6 54 plus 32. So F equals to 54 plus 32, that is 86 degree. So temperature is 86 degree Fahrenheit in this way. Third part is if the temperature is 95 degree Fahrenheit. इस बार हमें Fahrenheit दे दिया है and what is the temperature in Celsius और हमें Celsius में निकालना है. So again it is again a very easy question. We'll do the same thing, putting F equals to 95 degree in equation given, which is so 95 equals to 9 upon 5 into C plus 32. ये प्लस में ये वाली टर्म इधर जाके माइनस में हो जाएगी. 95 minus 32 is equals to 9 upon 5 into C. 95 में से 32 गए. 63 equals to 9 upon 5 into C. अब ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 63 into 5 और ये मल्टीप्लाई में C के साथ ये डिवाइड में चला जाएगा equals to C. It will be cut 1 1s are 7s are because 9 7s are 63. So C equals to 35 degree. So we have got our temperature in Celsius. C equals to 35 degree. Then fourth is if temperature is 0 degree Celsius. अगर हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में 0 डिग्री है, सो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. ये तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का यहाँ तक. एंड इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस. पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं. हमें सेल्सियस में टेम्परेचर 0 डिग्री दिया हुआ है, हमें फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है. सो वी विल राइट हियर पुटिंग
C equals 0 in given equation. So F equals to 9/5. ये हमने जब सॉल्यूशन निकाले थे तब भी हमने किया था ये. F equals to 9/5 into 0, 0 plus 32. So Fahrenheit पे हमारा टेम्परेचर आ गया 32 डिग्री. Now second part of the question is Fahrenheit 0 डिग्री गिवन है, हमें सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना है. Putting F equals to 0 degree in given equation. So what we will get? 0 equals to 9/5 into C plus 32. ये प्लस में लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस में जाएगा. The remaining is here. Minus 32 is equals to 9/5 into C. ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. Minus 32 into 5 upon 9 equals to C. 32 5s is minus 160 upon 9 equals to C. When we will solve 160 upon 9, we will get C equals to minus 17.8 degrees Celsius, and this is an approx answer because it is not completely divisible. So this is done. Now fifth part, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. हमें एक ऐसा टेम्परेचर निकालना है जो F और C दोनों में इक्वल हो. So how we will do this? हम अज्यूम करेंगे let the equal temperature in both Fahrenheit and Celsius be x. उस टेम्परेचर को हमने x लेट कर लिया. So हम f की जगह भी x रखेंगे और c की जगह भी x रखेंगे and then we'll solve the equation. X equals to 9/5 into x plus 32. So x वाली टर्म लाइक टर्म्स है, एक तरफ ले आएंगे हम. x minus 9/5 x equals to 32. We'll take the LCM. x upon 1, 9/5, 5 will see LCM. 1 के टेबल में 5 कब आता है? 5 जा इंटू न्यूमरेटर. 5 इंटू एक्स माइनस 5 के टेबल में 5 1 जा इंटू न्यूमरेटर. 9x equals to 32. So what we will get? 5x minus 9x equals to 5 हम यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा. 32 into 5 will be left here. 5x minus 9x minus का 4x equals to 32 into 5. Then x will be left here. ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. 32 into 5 upon 4 माइनस का. It will be cut. 8 जा माइनस ऊपर चला जाएगा. 8 5 जा 40. So हमारा x की वैल्यू आ गई minus 40 डिग्री. So we can write therefore minus 40 degree is the temperature same in Fahrenheit and Celsius both. So in this way this question is done. If you have any doubt in any of the part, you can ask your queries in comment section below.